अगेन हेलो फ्रॉम द skdesigns, दिस इज सलमान खान। और आज की वीडियो में जो प्लान हमने पिछली बार आपको बताया था कि यू कैन बाय द क्रिएटिव क्लाउड। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशन। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, अपनी क्रिएटिव क्लाउड को एक्टिवेट करने के बाद आपने अपने स्क्रीन पे आ जाना है। तो लेट्स सी। Okay, so here are the services which you can buy. Okay, so this is the home page जो कि everyone will see जब वो लोग इस सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं। तो here क्योंकि मैंने तुर्किया के थ्रू बाय किया है, सो इस जस्ट गोइंग टू लैंग्वेज ऑफ तुर्किश। तो लेट्स सी ये चीज़। So I have already installed these applications in my desktop or my web. That's why these are showing over here. So this is the like the face of the Creative Cloud. इसको ज़रा मैं आपको explore करूँ, then we can just move forward. So here are the applications, ठीक है। जितने भी आप अपने application पे अपने Creative Cloud के ऐप पे इंस्टॉल कर लेंगे, so it will appear like this. Okay. तो नेक्स्ट पे है कि कुछ अपडेट्स यहाँ पे आएँगी, जो अगर आप एप्लीकेशन में अपडेट्स ला रही हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आएँगे, ठीक है। तो दीज़ आर लाइक कैटेगरीज़ बिलो। एडोबी एक्सप्रेस है, एडोबी फायरफ्लाई है, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर इन अ स्पेसिफिक वीडियो। उसके बाद कुछ कैटेगरीज़ हैं, लाइक व्हेन यू चूज़ फोटोग्राफ, it will appear the tools which are related to the photograph. Okay. The second one is the Firefly and the generative AI. Mostly Adobe Photoshop and Illustrator are working on these two things. Then graphic design. So we have Illustrator, Photoshop, and InDesign as well. For video, we have Adobe Express, Adobe Premiere Pro, and the rest of the things. Okay. For the illustrations, we mostly use Photoshop, Fresco, and the Illustrator. For the 3D and augmented reality, we have Substance 3D Modeler, Substance 3D Printer, Substance 3 Stager, 3D Stager. Okay. So the final is the Adobe Acrobat and the PDF 2 or 3 टूल्स। या मोस्टली हमारे पास पीडीएफ को क्रिएट करना, शेयर करना या उनको एडिट करना या उनको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। द मेन थिंग इज़ दैट अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं क्रिएटिव क्लाउड की, तो उसमें एडिशन ये भी आता है कि यू कैन जस्ट वर्क ऑन द पीडीएफ्स, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यू कैन अवॉइड द हाई फी वेयर यू यूज टू कन्वर्ट द पीडीएफ्स एंड convert them to Word or other files, or you can just make them editable या आप उनको PDF में कन्वर्ट करें, तो easily ये चीज़ हो जाएगी। और another plus point is that you can just scan the PDFs and images etc as well, and fill and sign etc easily। तो ये सारी options आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और फर्दर रिसोर्सेज लिंक्स यहाँ पे मौजूद है, लाइक यू कैन जस्ट मूव टू द स्ट्रोक, एडोबी स्ट्रोक एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है where you can get your images, stock images, fonts. We have like main thing is that the design. In the design, we need more fonts. You can just jump here, and you can get more fonts. Then, if you are like on the basic and you don't know how to do the work with the tools, then you can just take the trainings from here, or either you can watch my videos which will teach you how to use Photoshop, Illustrator, and other tools as well. And the portfolio link, enhance, and the support community. So yeah, I am just moving to all apps, and there are three options over here, जिसमें डेस्कटॉप है, मोबाइल है और वेब है। तो डेस्कटॉप में ये चीज़ें एप्लीकेशंस यहाँ पे मौजूद है, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट। और अगर आप मोबाइल पे यूज़ करना चाह रहे हैं, मज़े की बात ये है कि यू कैन यूज़ the Photoshop, Illustrator, Adobe Express, or Lightroom on your mobile as well. You just edit the videos and the movies and the shorts and the reels on the go. So easily बहुत अच्छी options हैं. You can just share the link, or either you can just log in the account of the Adobe on your mobile and you can just go with that. और फाइनली हमारे पास वेब है। वेब बेसिकली ऐसी है कि जहाँ पे आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, यू कैन जस्ट
move over here and you can start the work. So yeah, that's it. So thank you so much guys for listening the video and having interest in. So we will be back with another video and हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी Adobe Creative Cloud की डेस्कटॉप एप्लीकेशन की होगी, जहाँ से हम देखेंगे कि उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है एंड दैट्स इट. So stay tuned with it and have a nice day. Take care.